हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। और आज मैं इस चर्च में आई हूँ और ये एक पूरा विलेज है, एरिया इसका पूरा। और आज मैंने अपने लिए विलेज टूर बुक किया है जहाँ पर हम ओल्ड टाइम के कैरेक्टर से मिलेंगे, वो हमें उसके बारे में बताएंगे, कुछ ओल्ड इवेंट्स और कुछ एक्ट्स प्ले करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मेरे साथ। Hello, hi, my name is Vivian. I am a volunteer with the St Peter's Village Tour. It's a very enjoyable little job that I do. I meet some really lovely people, and for me, I'm not local, so I've learnt a lot about local history, the people who live here, and I love it. So thank you. Thank you. So ये चर्च के साइड में चर्च यार्ड एरिया है पूरा, और हम अभी इसे देख रहे हैं। So we have entered in this church. It's an old church. As you can see, beautiful as well. Local people. These are costume characters from Are you tax collectors? past centuries. No, you wouldn't be tax collectors sitting in a church. You've had it all already. My name is Richard Colmer. We Colmers lived many years ago. I myself died in 1495. Not bad for 500 years, really, when you think about it. He's from past more than 500 years old ago. As I say, we Colmers were great local entrepreneurs. We own great houses. We own great farms. About our clothing, which you might think strange, but we find it most comfortable and most serviceable. We're not poor people by any means, but neither are we rich, and we do have to work. So, our wonderful sleeves are specially designed so that we can release our hands to work, to all the things around the home that need to be done. But then when we hear a knock on the door, we can very quickly make ourselves tidy and presentable again, so no one knows what's been going on behind the scenes. And last of all, I need to tell you about our wonderful shoes, which are most comfortable. They have quite pointed toes. And we have been told by some of the visitors that there was in fact a fairly modern fashion hundreds of years after we lived with pointed toed shoes, and I can't quite remember what those shoes were called. Husband, do you remember? Pinkle wickers or? Winkle pickers. Oh, I suppose that makes sense. You remember them, madam? I'm surprised. We are going back now. So we are going to exit from the church now. Welcome to our little church here at St Peter's. My name is Brother Thomas, and I'm a member of the Order of St Benedict. I joined the order in the year 1400 at the age of 30. I know what you're thinking, sir. That's a bit late to join a religious order. But I had a little bit of a misspent youth, as it looks like you have actually. You fall over a bottle or something? Not far off it. Anyway, I stayed within the order till I was till 1434, which made me 64 years of age. You know. तो ये हमें एक मैप दिखा रहे हैं एंशिएंट टाइम का। There we are. या Got it? तो आप देख सकते हैं, हम चर्च यार्ड है यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के पीपल बरीड किया हुआ है। हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज़ द चर्च यार्ड, और ये वही चर्च है जहाँ से हमने एग्जिट किया अभी। Amongst them. Ladies on their own in my day would be out on their own, be up to no good. He's also the character from But past anyway. centuries. Now, the reason I challenge you so strongly is because it's August 1805. Napoleon's He's over from at Boulogne with some 1805. 3,000 ships and barges. And he's ready to transport across up to 170,000 men. So invasion So could be ये at any moment. 1805 But से हैं। we're not too वहाँ का worried. इंसिडेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं। Because in our barn over there, we have some troops stationed. And up there on the church tower, if you look, we have a naval officer up there on lookout. You better wave to him, he's up there somewhere. Hello. There he is. Yeah.
He gets हमें very, describe very, कर रहे very हैं upset old when people don't incident wave. of 1805. And I get upset because he's Navy and allowed the grog and I'm not. But that's another story, isn't it? चर्च से एग्जिट हो गए और अब आगे विलेज का टूर करने जा रहे हैं और ये हमारे गाइड आगे आगे चल रहे हैं। सो अभी हम इस विलेज में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे कॉस्ट्यूम कैरेक्टर्स दिखेंगे, बट यहाँ के विलेज आपको विलेज लगेंगे नहीं, बस कैरेक्टर्स ही दिखेंगे आपको पास्ट सेंचुरी से। वन मोर कैरेक्टर इज हियर। हेलो। Morning to you. Morning थैंक to यू। you. मॉर्निंग। Good morning, good people. Hello, everybody. वी आर गुड। My name is John Wesley, and I'm here today to तो इनका नाम जॉन open up वेस्ली है। the Methodist chapel across the road. इन्होंने ही इस चर्च को बनाया था जहाँ हमने विजिट किया है। This is a task that I've undertaken around the country. सो अब हम और आगे जा रहे हैं। अभी हम एक और कैरेक्टर से मिलने वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे नए कैरेक्टर जिनसे हम अभी मिलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। Allow me to show you a photograph of where you're standing now up until 1970. Oh wow! This is the village green, of course. 1970. It was a It was a village farmyard. when. This is the farmhouse here, the Wow. Bucket The farmhouse. old. And it was thanks अभी to हम the यहीं Bucket खड़े हैं family who और ये donated ओल्ड the फोटोग्राफ ground. है। That was a pleasure to meet you all. And Thank you. Thank you. अभी हम इस एरिया से एग्जिट हो रहे हैं। ये हमने पूरा कवर कर लिया है। इन्होंने हमें पूरा एक्सप्लेन किया। यहाँ पहले विलेज था, फोटोग्राफ भी दिखाई और अब हम आगे जाएंगे। सो आप देख सकते हैं ये ओल्ड फार्म हाउस है 1682 का। अभी इसके अंदर हमें जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैं इसीलिए आपको ये बाहर से ही दिखा रही हूँ। और ये कुछ कैरेक्टर्स और बैठे हुए हैं यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। They look like our village sign, and there were 500. दिस इज द साइन ऑफ द विलेज। And the winner was something. और ये देखिए कैरेक्टर्स कैसे फन कर रहे हैं मेरे पीछे। 1920. कितना अच्छा लग रहा है मुझे तो इन्हें देखना ही। इनकी ड्रेसेस देखिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनके हाथ में बेल है। AD, an Act of Parliament was passed that's never been repealed, requiring every village to have its own set of stocks. इनके हाथ In में जो view of टोकरी है this, उसमें St वूल Peter's है, आई village थिंक वूलन stocks were समथिंग। reinstated by Thanet District Council in इनके कॉस्ट्यूम शूज 2001. देखिए। We've been here ever since. Well, it feels, yeah. No, 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 no. That मस्ती ain't वाली true. फाइट कर रहे हैं। Now you look like very young, intelligent people. I'm going to tell you the truth. See, what it is. I do hear the voices. Here we go. And the voices do speak to me, see, and they do tell me lots of things. And then because I'm a very open, warm-hearted sort of person, I do like to pass it on. So. तो इन्होंने हमसे इंडिया के बारे में डिस्कस किया पर वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि फ्लो में बातें हो रही Because I थी। could come out and give you a slap. I'll stay here. So just please don't ever tell me I'm wrong. थैंक यू, बाय। Can you wave with the other hand, please? तो अभी हम यहाँ पर टी ब्रेक के लिए आए थे और अब हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं बाहर। सो ये हमारा ग्रुप आगे आगे चल रहा है और हम पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। सबसे आगे हमारी गाइड है। ये बिल्कुल विलेज नहीं लग रहा मुझे कहीं से भी, पूरा डेवलप्ड है एक्चुअली ना। मुझे तो कैरेक्टर से मिलके भी बहुत मज़ा आया जिनसे हम मिले थे रास्ते में चलते हुए विलेज में, जो प्रिटेंड कर रहे थे कि एंशियंट टाइम से है। और अभी मैं आगे एंजॉय कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। हम प्रिटेंड करने जा रहे हैं कि हम एक विक्टोरियन स्कूल में जा रहे हैं और वहाँ पर जो स्कूल की टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, तो जब तक वो हमसे बात ना करें हमें उनसे बात नहीं करनी है। ये हमें इंस्ट्रक्शन मिली है। मैं दिखाती हूँ। आगे आगे चल रहे हैं और हम लाइन में चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हाइट हमें लाइन अप किया गया है। My name is Miss Baldock, Mistress of the Infant School here at St Peter's, but you will address me as Ma'am. I would inform you that you do not speak unless you are spoken to by me. You raise your right hand to answer a question, and you finish everything that you say with the address Ma'am. Is that understood? Yes, yes, Very ma'am. good. We will now proceed to the school building. Please follow me. Oh my God, ब्लैक बोर्ड भी है पढ़ाने के लिए। The building 1847। in front of you
was formerly the infant and the girls' school. You will now study a picture to see how it used to look. Please notice the similarities and the differences. Best. Good, better, best. Never let it rest Never let it rest until your good is better until your good is better and your better best. and your better best. Where we now stand was formerly part of the grounds belonging to the Knuckles Almshouse. This is the large building behind you, which you will be visiting next. The trustees of the almshouse gave approximately 1/4 of its land for the building of an infant school. मजा आया इन्होंने हमें कुछ क्लासेस भी दी क्वेश्चंस भी पूछे They were. अभी हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं थैंक यू मैम करके एड्रेस करना था इन्होंने हमें पहले ही बता दिया था क्योंकि पास्ट सेंचुरीज़ में ऐसा ही होता था टीचर्स मिस्ट्रेस जो होती थी वो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी बड़ा मज़ा आया मुझे तो सम मोर कैरेक्टर्स कपड़े सुखा रहे हैं Well, सामने good morning. Good morning. Ladies and gentlemen, and welcome to Knuckles Almshouse, which used to be a workhouse or a poorhouse. I am Thomas Wall, and I was master of the workhouse before I became landlord of the Little Albion Inn, which is just down the road. 6 o'clock in the summer, 7 o'clock in the winter, and anyone who missed this roll call forfeited a delicious breakfast, madam. Gruel. And we made it with water, stirred it, and made sure there were plenty of lumps in it to give them the nourishment they required. Oh, I do hope they were very nourishing lumps, Mr. Wall. Oh, I'm sure they were, madam, very nourishing. I never tried it myself, but I'm sure they were nourishing. वो ये बेगर है मनी मांग रहे हैं She's pretending to be और ये भगाने आए What इनको are you doing? ये बेगर को भगा रहे हैं Nothing. I saw you holding out your hand. Being nice to all these. I saw you holding out your hand. Were you asking for money? What for? The church funds, sir. Church funds. Did she ask for money for the church funds? If you gave this creature money, what do you think she would spend it on? Sir, you know the kind of woman, don't you? Definitely. Yes, you'd spend it on spirituous liquor, wouldn't you? would. Yes, you कह would. रहे हैं अगर तुमने इन्हें पैसे दिए तो ये I do not believe you, शराब nor को do खरीद these good लेंगी people. Where are और you drink supposed to be करेंगी। working? Up in the bedrooms emptying the chamber pots, sir. और इन्होंने इनको भगा दिया यहाँ से Mr. Wall. It is. Scandalous, disgraceful behaviour. Totally. It's the meat, you know. It is the meat, madam. I will वो reduce चले the गए amount of फिर meat उनको that बाहर creature निकाल रहे हैं receives to 1 ounce. And she'll get that on Christmas Day only. By the church. Particular area? Great. Her grave? Were you told she's buried there? She's missing Take it down and back to the laundry. Mind you stay there until it's done properly. Hurry. शीज मिसेस नकल और ये जो हाउस बना है ये इन्हीं के नाम पर बना है First to नकल हाउस imagine what it was like as the workhouse or poorhouse that Mr. Wall has been telling you about. फिर से मनी मांगने आके और वो फिर से आ गए उनको भगाने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है फनी लग रहा है Come. I ain't finished it yet. I don't sir. care. Whoops. Give it और to अभी me. उन्होंने हाथ में ड्रिंक की बोतल भी ली हुई है अल्कोहल की बोतल That's not very nice of you, sir. Who gave you money to buy spirituous liquor? Not telling. Come, tell me, or you will be Not telling. emptying the chamber pots all day. Creature money इसलिए while I बोला was कि not किसी ने इसे looking. मनी भी दी है ये खरीदने के लिए तो वो उसको डांटने आए हैं Yes, definitely. Sir, if you did give this creature money, we will have to keep you in the workhouse for 2 whole months. And sir, that is who you will be living with. Does it appeal to you, sir? Funny enough, no. No, I अरे अगर don't आपने think. मनी दिया तो आपको 2 महीने के लिए अपने अंदर घर में रखेंगे पकड़ के और इसके साथ रहना पड़ेगा जिनको दिया मनी
Now, I would like to thank you, ladies and gentlemen, for taking the time to visit my lovely aunt. सो ये वाला फ़नी एक्ट देखकर भी मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आज हम। तो अभी आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिखाते हैं हमें। मेरे पीछे ये कितने ब्यूटीफुल घर बने हुए हैं, जो गांव तो बिल्कुल नहीं लगता, पूरे डेवलप्ड हैं, अच्छी अच्छी कार्स खड़ी हुई हैं सामने और ब्यूटीफुल हाउसेस हैं। ये गांव की गलियां तो बिल्कुल नहीं लगती। सो अभी हम यहाँ आए हैं कोव्स कॉटेज एंड द कोव्स, अभी बताएंगे इसके बारे में। Well, good morning to you all, and it is a joy to meet you. My name is Olive Raven, Miss. You may happen to meet my father, Dr. Thomas Raven, if you feel so inclined to visit the Red Lion. Well, I can see that you're admiring my home, part of which was constructed during the reign of Queen Anne, and this used to be the last house in the village. My widowed mother and I moved here in 1910 after my brother, Dr. Hugh Raven, got married and stayed on at the property to use it as his doctor's surgery. In 1921, we began using our smoking room as the headquarters. And you can't really see it, but there's wooden candle holders which have the date of 1798 inscribed on them, and that was the height of the smuggling trade at that time. So अभी हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली एंट्री इसलिए अलाउड नहीं है, कोविड चल रहा है। सो अभी हम यहाँ से एग्जिट होके देखो हमें आगे कहाँ ले जाते हैं। और ये पूरे गांव की गलियाँ जो अब शहर बन चुकी हैं, उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स है जो दिखा के हमें इस घर के बारे में बताएंगे। That young American pilot was flying his Thunderjet F-42, I think it was, yeah, F-84 from Manston when apparently an engine caught fire. Now, observers could see, I think he must have been a very brave man because people could see that he was trying desperately to steer his plane away from land, but there just wasn't enough time and it crashed. So जो ये पायलट थे, ये प्लेन उड़ा रहे थे, इनका क्रैश हो गया था प्लेन और इस हाउस में जाके गिरा था, यहाँ पे आके बम्प हुआ था। So that's the photograph of his plane. So he lost his life. He lost his life, and 3 other villagers, and a boy was very badly burned. Oh. And that was the before picture. So that's the ये इस हाउस की पिक्चर है जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था। And this is afterwards. और ये प्लेन गिरने के बाद की पिक्चर है। Total devastation. यहाँ पे वो प्लेन गिरा था। ये इन्होंने इंसिडेंट बताया है, प्लेन क्रैश हो गया था इस हाउस के ऊपर, वो 1952 में हुआ था ये इंसिडेंट। सो जो पायलट था ऑब्वियसली वो डाई हो गए थे, द पायलट डाइड एंड द अदर पीपल हु वाज देयर एट दैट टाइम डाइड। और ये सामने मुझे कुछ और कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जिनकी तरफ मैं जा रही हूँ। और ये हाउस के बाहर भी बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। Come right in, please. Here, have you? Morning. Come right in. Good morning, ladies and gentlemen. You are standing on what was Ranelagh Pleasure Gardens. And this cottage here was the gatekeeper's cottage because it stood on the entrance to it. It's now called Fink Cottage for obvious reasons. Allow me to introduce ourselves. We are Mr. and Mrs. Charles Newbold. And from the 1800s to 1838, I used to run the Red Lion Public House in the High Street. The drawing of the gardens, how they looked at the time. Oh, old pictures of the garden. And the dance floor, and this tree, this young tree, we believe is this large 200-year-old plus. Oh, this is 200 years old tree जो आपको सामने दिख रहा है बड़ा सा। अभी हमने ये पूरा एरिया कवर कर लिया है और हम वॉक करके आगे की तरफ जा रहे हैं। मेरा ग्रुप मुझे लग रहा है आगे निकल, ये सामने ही जा रहे हैं। सब ने अपने हाउस को बाहर से कैसे फ्लावर्स से डेकोरेट किया हुआ है। ये भी एक चर्च दिख रहा है मुझे। These soldiers or excisemen about? Well, they're looking for me. Yeah, my name's Snelling, Josh Snelling. You might have heard of me. That's on the way to the lighthouse. That's why it's called Lanthorn Road. Lighthouse that's been there since 1500. I was born in 1741.
1741 में which is I'm looking reasonably well for it. And yeah, I run a good little business. Well, it's not such a little business because my sons joined me and my grandson now, George and Jim. They couldn't prove anything. So ये 96 I was fined years old once के for थे जब ये die हुए just- थे. It wasn't. So हमने ये पूरा विलेज का एरिया कवर कर लिया है और अब हम आगे जा रहे हैं. So मेरे पीछे आप ये चर्च देख सकते हैं. अब हम इसमें वापस जा रहे हैं. हम स्टार्टिंग में भी इसी के अंदर गए थे और अब हमारी एग्जिट भी इसी के थ्रू होगी. तो इसमें हम वापस जा रहे हैं. और ये चर्च की एंट्री पर बना हुआ है और ये चर्च में हम एंटर कर रहे हैं. Some more characters from past time. So ये ओल्ड टाइम से नर्सेज हैं. जब चिकन पॉक्स हुआ था यहाँ पर एक पेंडेमिक आई थी, इन्होंने हेल्प की थी. So मैंने मास्क लगा लिया और अब हम दोबारा से इस चर्च में एंट्री कर रहे हैं. I'm the village rat catcher, and I go round विलेज में clearing the village of लिए rats. इन्होंने रैट. And the overseers of the poor, they pay me for doing the job. Used to do this job with my little Jack Russell until 3 of these varmints attacked him and killed him. So I need to go up to London to see Jack Black. He breeds Jack Russells that are rat catchers. He also breeds lovely rats. And that's why these days you get rats of all different colours. फन कर रहे हैं. The overseers of the poor, they pay me a penny a rat. Whereas when I go to the bakers and catch them, he pays me 2pence a rat. And he bakes lovely pies. Enjoy your trip, folks. थैंक यू. सो ये वो रिकॉग्निशन ऑफ अवार्ड है जो इस टूर को मिला हुआ है क्वीन की तरफ से. यू वर रियली नाइस टू अस. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. Thank you for being, as I said, such a lovely group. या थैंक यू. तो हमने इस पूरे विलेज को चेकआउट कर लिया है और अब मैं यहाँ से एग्ज़िट हो रही हूँ. और ये वही चर्च है जिसमें हमने एंट्री की थी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ. सो आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो और जो मैंने आपको एक्ट्स दिखाए हैं, ओल्ड टाइम कैरेक्टर्स दिखाए हैं और जो विलेज का टूर कराया है वो भी अच्छा लगा हो. और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करूँगी. अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़. सो मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन अपना ध्यान रखिए. स्टे फिट, स्टे हेल्दी. बाय.